Hello students, welcome to your channel. Please like, share and subscribe your own channel, School Studies. School Studies is pleased to announce the launch of our educational website, Patel Section. After years of hard work and dedication, we are delighted to officially announce the launch. Today we will see a video related to NCERT Solution for Class 9 Geography, Social Science, Chapter 4, Climate. Let's solve textbook exercise. So the first question is, choose the right answer from the four alternatives given below. The first question is, which one of the following places receives the highest rainfall in the world? So the answer is Mysore. The wind blowing in the northern plains in summers is known as Lu. Which one of the following causes rainfall during winters in the northwestern part of India? So the answer is western disturbance. Monsoon arrives in India approximately in early June. Which one of the following characteristics the cold weather season in India? So the answer is warm days and cold nights. Next question, what are the factors affecting the climate of India? So the factors which affect the climate of India are latitude, altitude, pressure and winds. Why does the India have a monsoon type of climate? So the climate of India is described as a monsoon type. Monsoon refers to the seasonal reversal in wind direction during a year. Monsoon type of climate is characterized by the distinct seasonal pattern. The weather conditions greatly change from one season to the other. These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country. The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is a variation in rainfall pattern. Four main seasons can be identified in India: the cold weather season, the hot weather season, the advancing monsoon and the retreating monsoon with some regional variations. The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. The duration of monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid-September. ओके तो क्लाइमेट जो इंडिया का डिस्क्राइब करता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. मॉनसून रेफर करता है सीजनल रिवर्सल, जो विंड डायरेक्शन चेंज होता रहता है ड्यूरिंग अ ईयर. मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है कैरेक्टराइज्ड है बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न से. वेदर कंडीशन जो है ग्रेटली चेंज होता है फ्रॉम वन सीजन टू अनदर. ये चेंजेस जो आता है वो पर्टिकुलरली हम नोटिस करते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर. कोस्टल एरियाज में ये एक्सपीरियंस नहीं होता वेरिएशन इन टेम्परेचर, उसमें सिर्फ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न चेंज होता है. फोर मेन सीजन है इंडिया के अंदर: कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन एंड एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून विद सम सीजनल वेरिएशन. इंडिया का क्लाइमेट है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है बाय मानसून विंड्स. जो ड्यूरेशन है मानसून का वो बिटवीन है 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर. Which part of India does experience the highest diurnal range of temperature and why? तो regions के अंदर experience होता है ये phenomena जो है mostly experience किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, और इसके पीछे रीजन है द इफेक्ट ऑफ थार डेजर्ट. और ये रीजन जो है उसके पास में ओशन नहीं है, इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर नहीं रहता. Which winds accounts for rainfall along the Malabar coast? So the answer is southwest monsoon winds जो है responsible for the rainfall along the Malabar coast. Next, what are the jet streams and how do they affect the climate of India? Jet streams are the narrow belt of high altitude about 12,000 meters. Westerly winds in the troposphere. Their speed varies from about 110 km per hour in summer to about 184 km per hour in winter. Number of separate jet streams have been identified. The most constant is the mid-latitude and subtropical jet stream. They cause depressions during the monsoon season. ठीक है, jet streams जो है वो एक narrow belt है high altitude का about 12,000 meters. और westerly winds in the troposphere है. उनकी स्पीड जो है वेरी करती है फ्रॉम 110 किलोमीटर पर आवर समर के अंदर और 184 किलोमीटर पर आवर होती है विंटर्स में. नंबर ऑफ जेट स्ट्रीम्स जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें से मोस्ट कांस्टेंट है वो है मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. वो डिप्रेशन कॉज करते हैं ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. नाउ डिफाइन मॉनसून्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्रेक इन मॉनसून? The breaks in monsoons are related to the movement of monsoon through
फॉर वेरियस रीजंस ये जो थ्रो है एंड इट्स एक्सिस जो मूव करते हैं नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, जो कि डिटरमाइंस करते हैं बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। काफी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रेनफॉल में वो बताया जाता है। और इसके एक्सिस जो है फ्रॉम द मॉनसून लाइज ओवर द प्लेन। ठीक है, अगर प्लेन एरियाज में एक्सेस हो रहे हैं तो वहां पे काफी अच्छा रेनफॉल होता है। और द अदर हैंड अगर एक्सेस शिफ्ट करते हैं फ्रॉम क्लोजर टू द हिमालयस तो वहां पे लॉन्गर ड्राई स्पेल्स होता है प्लेन्स एरिया में, और वाइड स्प्रेड रेनफॉल होती है माउंटेनियस एरियाज में जैसे हिमालयन रिवर्स में। Why is the monsoon considered as a unifying bond? The unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. The seasonal alteration of the wind system and the associated weather conditions provide a rhythmic cycle of seasons. Even the uncertainties of rain and undistribution are very much typical of the monsoon. The Indian landscape, its animal and plants life, its entire agricultural calendar and the life of the people revolve around this phenomena. Year after year, people of India, from north to south and from east to west, eagerly await the arrival of the monsoon. These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. The river valleys which carry this water also unite as a single river valley unit. जो इन्फ्लुएंसिंग है, यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस है मॉनसून का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो क्वाइट प्रेसिटिबल है। ठीक है, सीजनल ऑल्ट्रेशन जो होता है वो विंड सिस्टम और वेदर कंडीशंस जो साइकिल जो चेंज होता है सीजन का उसकी वजह से होता है। कुछ अनसर्टिनिटीज होती है रेन में और अनडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई एरिया में ज्यादा होता है कोई एरिया में कम रेनफॉल होता है। इंडियन लैंडस्केप जो है वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट लाइफ बहुत है और वो एग्रीकल्चरल कैलेंडर पे एंटायर जो है चलता है। पीपल्स की लाइफ उनके फेस्टिविटीज वो भी रिवॉल्व करते हैं यही फिनोमिना के अराउंड। ईयर आफ्टर ईयर जो है पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो एगरली वेट करते हैं मॉनसून का, बिकॉज मॉनसून की वजह से एग्रीकल्चर एनिमल लाइफ प्लांट लाइफ सब पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉनसून। इसलिए मॉनसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री और प्रोवाइड करते वाटर फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। रिवर वैलीज जो कैरी करते वाटर वो भी यूनाइट और सिंगल रिवर वैली यूनिट बनाता है। Why does the rainfall decrease from the east to the west in the northern India? As they move in the direction, the winds lose the moisture content. Hence the reason for the reduction in the rainfall. ठीक है, जब जैसे जैसे विंड जो है ऊपर जाती है डायरेक्शन जो है इसका चेंज होता है, उसकी वजह से उसका जो मॉइस्चर है जो ओशन और सी में से जो मॉइस्चर लेके वो विंड जाती है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से जो है रीजन है कि नॉर्दर्न एरियाज में रेनफॉल कम होता है। Next is give reason as to why. Seasonal reversal of wind direction takes place over the Indian subcontinent. So दो रीजन है उसके, सीजनल चेंज जो होता है इन डायरेक्ट विंड डायरेक्शन प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और एल नीमो प्लेज अ मेजर रोल। नेक्स्ट इज द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर फ्यू मंथ्स। तो रेनफॉल डिपेंड करता है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स पे और वो रैपिडली प्रोग्रेस और कवर करता है लार्ज स्वेक्ट ऑफ कंट्री बाय जुलाई। द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल, it is because of northeast monsoon winds. The delta region of eastern coast is frequently struck by cyclones क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो फेस करता है frequent pressure changes. Parts of Rajasthan, Gujarat and the leeward sides of the western Ghats are drought prone because वहाँ पे जो है fall in the rain shadow regions of Aravalli mountains. Next, discuss the mechanism of the monsoon. The differential heating and cooling of land and water creates low pressure on the landmass of India, while the seas around experience comparatively high pressure. ठीक है, जो हीटिंग एंड कूलिंग जो लैंड हीट होता है और कूल होता है और वाटर जो क्रिएट करता है लो प्रेशर इंडिया के लैंड मास में, और वाइल जो सी एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस्ड होता है। जो शिफ्ट है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर
over the Ganga plain. ठीक है, this is the equatorial throat, normally positioned about 5 degree north of the equator. It is also known as monsoon throat during the monsoon season. The presence of high pressure area east of Madagascar, approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The intensity and the position of this high pressure area affects the Indian monsoon. The Tibetan plateau gets intensively heated during summer, which results in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau at about 9 km above sea level. The movement of the westerly jet stream to the north of Himalayas and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer. Next, give an account of weather conditions and characteristics of cold season. The cold weather season begins करता है from mid to November in northern India and stays till Feb. दिसंबर और जनवरी जो है कोल्डेस्ट मंथ माने जाते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर. जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है एज वी गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. जो एवरेज टेम्परेचर है चेन्नई का वो है ऑन ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि नॉर्दर्न प्लेन में जो है रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस. जो डेज है काफी वार्म होते हैं और नाइट्स जो है कोल्ड होते हैं. Frost is the common in the north and the higher slopes of Himalaya experience snowfall. During season जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड winds प्रिवेल करते हैं पूरे कंट्री के अंदर और वो ब्लो करते फ्रॉम लैंड टू सी बैक. द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर ड्राई सीजन भी माना जाता है. सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है करते तमिलनाडु कोस्ट के अंदर फ्रॉम दिस winds और वो ब्लो करते फ्रॉम सी टू लैंड. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर फेबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप होता है और लाइट विंड्स मूव करते टू आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरियाज. ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दिस विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम ईस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट. वेदर जो है इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर्स और लो ह्यूमिडिटी एंड फेबल वेरिएबल विंड्स. सो जो वेदर वो मार्क्ड होता है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि कोल्ड वेदर सीजन जो है ओवर नॉर्दर्न प्लेन, इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. लो प्रेशर सिस्टम जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया और मूव इनटू द इंडिया और ये कॉज करता है मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल्स इन माउंटेन्स. Although the total amount of winter rainfall जिसको हम महावत भी बोलते हैं वो स्मॉल होता है, मतलब इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती और इसकी वजह से जो है कल्टीवेशन ऑफ रावी क्रॉप्स होते हैं. पेनिसुलर रीजन जो है डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन. हार्डली वहाँ पे कोई नोटिसेबल सीजनल चेंजेस दिखाई देता है टेम्परेचर पैटर्न में. ड्यूरिंग विंटर्स वहाँ पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है बाय द सी. Next, give the characteristics and effects of monsoon rainfall in India. The monsoon, unlike the trades, are not steady winds but are pulsating in nature, affected by different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seasons. The duration of monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid-September. Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continue constantly for several days. This is known as the burst of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon shower. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula, generally by the first week of June. Subsequently, it proceeds into the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later on approximately the 10th of June. This is fairly rapid advance. The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. The lofty mountain causes the monsoon winds to deflect towards the west over the Ganga plains. By mid-June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives from over Saurashtra, Kutch and the central part of the country.
The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of Ganga plain. Delhi generally receives the monsoon shower from the Bay of Bengal branch by the end of June. Tentative date is 29th of June. By the first week of July, western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and eastern Rajasthan experience the monsoon. By mid-July, the monsoon reaches Himachal and the rest of the country. So this is the characteristics and effect of monsoon rainfall in India. So this was chapter 4 of NCERT Solution for Class 9 Geography. I hope you like my video. Thanks for watching my video. Thank you. Please leave comment, question or doubts in comment section if you have any, or you can drop a mail to us. You will find my email ID at the end of this video. You can also join us on Facebook page, follow us on Instagram, connect us on LinkedIn or tweet us on Twitter. Thanks for watching my video. Thank you.